Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. I am with chapter number 4. Chapter is Heredity and Genetics. It is biology 10th class. And in this chapter, I have the topic concept of evolution. And it is explanation, how we can explain the concept of evolution. Evolution concept को किस तरह explain किया जाएगा और evolution क्या होता है. ये जो word है, the word evolution जो है, evolution जो word है, it has been derived from the Latin word. It has been derived from the Latin word evolver. ये इवॉल्वर वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स टू अनफोल्ड, मीन्स किसी चीज को अनफोल्ड करना, मतलब उसका आगाज होना, उसका एग्जिस्टेंस होना. ये मीनिंग है इवॉल्वर का. लैटिन वर्ड है. It is a Latin word derivation of the word evolution, means to unfold to something, to explain something, to know about it, its origin, where its origin take place. That evolution जो है, इसका क्या मतलब होता है evolution का? Important question है. Evolution हम कहेंगे it is a sequence, it is a gradual, it is a sequence of changes. It is sequence of changes taking place in an organism. एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें चेंजेस आते हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं, जिसमें हमें ये एक नया दिखता है. और ये चेंजेस किस में आता है? these sequential changes takes place in an organism. किस ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर लूंगा? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स which of millions of years ago they are taking place sequential changes in it, and from this, when in primitive organisms there are sequential changes with a period of time, then there is a production of new evolution, formation of new evolution, formation of new species. वो वहां क्या है, एक न्यू स्पीशीज जो होती है वो एग्जिस्ट होती है बाय द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म when over a period of time, मतलब thousands of years ago, millions of years ago, there is a sequential changes that take place with that primitive organisms. And now this primitive organisms, its existence in the modern time is with a new species. That a new species exists from its primitive organism. जो इसका primitive organism होता है, जो इसका ancestor होता है, वहां से इसकी क्या होती है? असल में it descends by the pre-existing organisms. यही डार्विन ने भी कहा था अपने थ्योरी में कि no new creator is
in existence, it always exists from a pre-existing organism. यहाँ जो डार्विन ने कहा था 1859 की बात है, कहा कि जो यहाँ हमें न्यू ऑर्गेनिज्म डिसेंट होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो डिसेंट होता है, दैट मीन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस विद अ न्यू स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिज्म डिसेंट्स with modifications, नए modifications के साथ आता है, and with the new modifications it causes variations among that organisms. Now this new organism not resembles with its primitive organism, जो इसका primitive organism था, primitive organism जो था इसका primitive, अब ये इतना नया बन गया ये organism, अब इसको ये primitive organism से पार्टली रिजेंबल करता है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अपनी थ्योरी में कि देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन दैट ऑर्गेनिजम्स with gradual modification over a period of time. There is a formation, there is a production of new species, new organisms. Evolution takes place from the primitive organisms over a period of years. There is a sequential changes with its characters, and it exists with time a new species. तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आती है, यहाँ पे जो वेरिएशंस आती है और ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशंस आती है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हम एवोल्यूशन। यहाँ जो एवोल्यूशन में हमने क्या देखा है, एग्जिस्टेंस, शाबाश याद रखिए इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। When there is the existence of new species, it is shabash, it is with variations, and this variations takes place by means of reproduction. By means of reproduction there is the variations, with variations there is reproduction. Variation take place by reproduction and existence of new species. Reproduction में क्या होता है, there is you know that in reproduction there is random recombination of genes. Yes, you know that there is a crossing over in chromosomes में crossing over के कारण वो ये चीज तब हो सकता है when there is a reproduction में क्या है, chances of random recombination of genes crossing over in chromosomes, and you can say that later on there is the mutation, and there is also the chance of pairing of new chromosomes, which all these cause the variations. When there is the accumulation of variations, there is existence of new species, and असल में ये exist हुआ है, एक नया species with new variant के साथ आया है, a species with slightly modification by their primitive organisms, by their ancestors, is the concept of evolution. This concept of evolution, इसमें क्या होता है, always there is a verification among the individuals in a population.
एवोल्यूशन जो होता है यहाँ, अगर हम देखेंगे कि वेरिएशन जो आती है एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है, हम पढ़ेंगे इसको अभी एग्जांपल में. इन एनी ऑर्गेनिज्म इज विद सम variations and it is with lifetime, and it is associated with it is lifetime, and to that individual these variations is the lifetime, and it has no inheritance, इनहेरिटेंस. इसमें मैं एग्जांपल में बताता हूँ आगे. इस पे एग्जांपल एक है, देयर इज नो इनहेरिटेंस. यहाँ समझिए आप, वेरिएशंस एक इंडिविजुअल में आती है और इसके साथ ये लाइफ टाइम रहती है, और नो इनहेरिटेंस. आपको पता है उस वेरिएशन को हम कहते हैं एक्वायर्ड. शाबाश, जो मैंने पढ़ाया कि लास्ट लेक्चर में, acquired variation. These are the acquired variation. These are not transmission from the primitive organisms to the new offsprings. It is not seen. That means this type, they have this type of variation. This type of variation has no role. It has no role in evolution. This type of, that means acquired variation जो है, it has no role in the evolution. If there is the role in evolution, that is the genetic variation, that is the inheritance variations play important role in the concept of evolution. That means inheritance variation play important role in the concept of एवोल्यूशन. इनहेरिटेंस वेरिएशन में क्या होता है, यहाँ जो कैरेक्टर्स शेयर होते हैं फ्रॉम द एंसेस्टर्स, इसमें क्या होते हैं, इन इनहेरिटेंस वेरिएशन में क्या होता है, इस इनहेरिटेंस वेरिएशन में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स वो शेयर्ड होते हैं. दैट इज शेयर्ड from pre-existing species. Yes, from pre-existing species to new offsprings, when there is a sharing of the characters which are shared from, कहाँ से share होता है, from pre-existing species से, pre-existing species to a new species. This is the inheritance variation, and it play importantly role in the concept of evolution. Then यहाँ पे हम कहेंगे जो evolution जो concept है, it is best explained by taking the genetic variations, by taking the inheritance variations into consideration. That means I will go to explain this concept of evolution with an example. ये हम जो evolution है, इसको हम, ये टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, आपके टेक्स्ट बुक में, बोर्ड टेक्स्ट बुक में हम इसको 3 इलिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन फर्स्ट, नोट पे भी मैंने मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू नोट में कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ आपको. illustration second, then is the illustration. I will go to explain this illustration third. This concept evolution को पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने 3 illustrations. I will tell you that I will explain the concept of evolution by taking the 3 evolution. The concept of evolution जो है, we will take the illustration first. It is the illustration first. By illustration first, I am going to explain this thing. I will take here the diagram. See, this illustration first is based upon the natural selection. ये natural selection पे based है. Based upon the natural selection.
नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है. That means there are the natural factors, there are the natural situations which bring us evolution, which bring us a new variant, a new species from its pre-existing species is a evolution. इसी को कहते हैं evolution. आप देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ. यहाँ मान लीजिए this is the first. It is a piece of land where there is a survival of the red color beetles and the green color beetles. Red color beetles, yes, I have a red marker that I will show it here. This plus represent the red beetles. Red beetles, ये insects है, red beetles. And by green beetles कैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. This by the black pen I will show this. Say this is the green beetles. Green beetles. Now you have two things, red beetles and green beetles. This place of land, and there is a grass. Grass is green in color, and these beetles feed on the leaves, green leaves of this area. I take this area here. This area is abundant of red beetles. It is abundant of red beetles. यहाँ बहुत सारे number में है, and they feed on the leaves of the plants here. This is the number of the red beetles. I will explain the concept of evolution by taking the illustration first. With the help of illustration first, I take the red beetles of this in a given piece of land, in a given area. There is abundant number of the red beetles rather than the green beetles. Here it take place. It is the red beetles. Now by chance there is the green beetles. Here it is the green beetle. Here it is the green beetle, that is 1 or 2 or in number. हमने क्या देखा, ये जो red beetle जो है, red beetles, they are visible to predator. They are visible to the predator. Say here the predator is the crow. ये इनको खाता है, इन beetles को खाता है, क्योंकि ये घास में जो घास है that is green in color. यहाँ पे जो ये less number of beetles है, green beetles, they come into existence by the gene mutation. Sometime there is a genetic mutation, there is a genetic, इसी को हम कहते हैं genetic variations या inheritance variations. ये इनकी existence जो हुई है वो इन्हीं से हुई है. वो green beetles की जो existence हुई है वो red beetles से ही हुई है. मतलब it is the natural selection here. Some mutation takes place. Somewhat there is a genetic error. There is a genetic manipulation. There is a genetic change. Due to the genetic mutation or genetic change, there is the existence of some unique type of organisms. What are these unique type of organisms? That is the green beetles come in their population of the red beetles. This area is abundant of the red beetles. क्या हुआ, जो crow होता है ये इनको खाता है predator. They eat, they feed upon the red beetles. नतीजा क्या होता है, इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन होना होता है. और but the number is not decline, there is also the rate of reproduction. There is a reproduction among the red beetles, and their number will be equalized. If there is a predator, they feed the red beetles. Crow feed the red beetles and their number is decline, but this number is equalized. It can be equalized. ये equal हो सकता है by the reproduction. इनमें reproduction, क्योंकि इनका number भी बढ़िया है, बहुत है. तो क्या है, हम देखते हैं with time when the number of predators increases, then the number of the red beetles decreases. Chances of decreasing of the number of the more predator will feed more red beetles and their number remains less. But here the green beetles, they remain invisible to the crow. Crows not feed, they not identify, क्योंकि ये green color है. Green color beetle resembles the color of the leaf. Therefore these green beetles remain invisible to the
crows and they are not feed up by the crows. What result here? Here get this shows the here the reproduction. Here these green beetles shows the differential reproduction. They show the differential reproduction. They show the differential reproduction. By means of differential reproduction, the variation that take place here, they will reproduce to each other. When there is a reproduction, what takes place? Then there is a decline, slowly there is decline number of the red beetles, and here is the chances of increase of the green beetles का chances increase हो रहा है यहाँ पे, because these green beetles remains invisible to the eyes of the crow. Here it is a natural selection. Here the natural selection, when there is a by chance there is a genetic variation in abundant population, and some differential organisms come into existence, and it says that this area will remain now much more abundant by the green beetles. Now the number of green beetles here increases back because they remain invisible to the crow. They are not feed by the crow as a predator, and the number of the red beetles decline. इनका number धीरे धीरे decline होता जा रहा है. What then result? The result is there is the abundant number of now the green beetles increase in number. Now there is, हमें लगता अब ये जगह किससे है? ये जगह पहले से ही बनी हुई है, मतलब green beetles से. Now the green beetles जो यहाँ पे है, green beetles जो है, their existence takes place. Then their existence takes place, but their existence is from the red beetles. जो इससे पहले ये land of area किससे, they were abandoned by the red beetles. By chance there is a genetic mutation, there is genetic variation. By chance there is a there were the less number of green beetles, but they remain successful in adaptation. They remain successful in the natural selection. They remain successful in causing the reproduction rather than the red beetles. Then now the red beetles जो है, they remain less adaptive to this region, less adaptive to this region. इस region में ये less adaptive रहे क्योंकि they are easily find out by the predators. Predator is here the crow is a natural factor which feed on the red beetles, but the green beetles remain invisible. Their number increases by showing the differential reproduction. Now this area, it is the illustration first. With the help of illustration first, how there is the existence of green beetle from the red beetles. Red beetles से ही इनकी existence हुई है. अब यहाँ पे एक नई species आई, एक नई there is slightly verification. They are of green color. Then they have the feeding habitat, living habitat, way of reproduction is the same. There is same other means of survival, but now adaptation here, they have more adapted, they are less adapted. And this illustration, with the help of the illustration first, it is based upon the natural selection. Natural factors are responsible in causing here the evolution of new species. What new species existence is? Green beetles from the red beetles. Then how by chance there is a genetic mutation, genetic change, there is slightly genetic genetic error, by mistaken there is a production of the green beetle. यहाँ देखिए how they prove themselves better in adaptation in this given area of land. Now it was the illustration first, and it explains the concept of evolution. वो illustration first से अब समझ में आया होगा आपको कि किस तरह यहाँ हम evolution concept को explain कर सकते हैं. Now I will take the second here illustration second. Another यहाँ पे illustration second जो है, it is based upon
natural disaster, natural, sometimes natural disaster. Always there is a natural instability. Every surrounding, in every area there is natural instability. We have to sometimes stand against the natural instability. Then by chance there natural instability कारण से ही यहाँ पे हमें कुछ नए स्पीशीज डिराइव होते हैं, उनको चांस मिलता है टू रिप्रोड्यूस, ऑल्दो उनका नंबर कम होता है. लेट अस वी एक्सप्लेन दिस by illustration. Second, you take this area, piece of area here. Now this piece of area is here with, you say that here I will going to explain this here. Then here you say that these are the this is the red beetles. I will write it by the red pen. Red beetles, same red beetles here. Then here is the, जो यहाँ पे मैंने zero बनाया, यहाँ पे बिल्लू. Now it is a billow beetle. Now here this area is more abundant, same by the red beetles. It is abundant by red beetles, and there is less number of the billow beetles. Now it is based upon the natural disaster, sometimes give chance of the evolution of new species. Now you say that here is a less number of the billow species. The number of billow species is less as compared to the red beetles. Billow beetles are lesser in number as compared to red beetles. Although जो यहाँ पे जो predators है, predator, ये जो predator, again I will talk about the predator here, the crow. जो crow है, it feeds on both red beetle as well as it feeds on the billow beetle. ये दोनों पे feed करता है. It feeds on red beetle as well as, that means red beetle भी visible है इसमें और billow beetle भी visible है इसमें. क्या कारण है? यहाँ पे मैं मतलब यहाँ predator as a crow, ये they feed on the both. Although the billow beetles are lesser in number than the red beetles. Now I talk about the natural disaster here. With the help of natural disaster, by chance there is the survival, there is the chance of survival of the less number of individuals in a given population. Here the less number is of the billow beetles. मान लीजिए natural disaster takes place and it crushed the huge population, इतना population crash हुआ है. मान लीजिए एक natural disaster आया है, snowfall, that means landslide take place, volcanic eruption takes place, earthquake, tsunami, मतलब various forest fire take place. And यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो beetles है, they are microscopic animals, they are insects, they feed on the surface of the land. यहाँ पे मान लीजिए ये जो elephant आया, elephant foot जो आया, ये सारे एलिफेंट के जो फुट होता है उसके नीचे आए, जिसके वजह से क्योंकि ज्यादा जो होते हैं खतरा किन को होता है, आपने देखा होगा, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन. दैट मीन जिन इंडिविजुअल, जिस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, जहाँ पे मतलब खुदा की आफत ज्यादा होती है, वही क्रैश ज्यादा होते हैं. जो अबेंडेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं वही ज्यादा खतरे में रहते हैं, खतरे में आ जाते हैं. तो यहाँ पे खतरे में कौन आ गए? यहाँ पे खतरे में सारे के सारे आ गए रेड बीटल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीटल्स come into a danger, come into a threat. That means they all then that takes place on falling the elephant foot. इस पे क्या गिरा? हाथी का जो पैर है इस पे गिरा, तो जिसके वजह से ये मर गए. Now यहाँ पे जो ये इससे पहले जो बिलू बीटल थे, ये क्या थे? They were lesser in number, less in number. यहाँ हम लिखेंगे least in number थे. अब इनको क्या मिला? They now get the chance of survival. इससे पहले there were the competition between the red beetles and the billow beetle. There were the competition for food, for shelter, for living, for reproduction. Now here is the billow beetle. मतलब अल्लाह ताला की करामात से इनको अब चांस मिल गया to survive. They show the reproduction. They show the rate of reproduction. When they show the continuous rate of reproduction, by the reproduction now
by the reproduction, by means of reproduction, they have got the chance by the natural disaster. Here the natural disaster, natural factor is the elephant's foot. इस पे पड़ा तो क्रश हो गए, जो बहुत सारे जो रेड बीटल्स थे इसमें वो क्रश हो गए। अब ये जो लैंड एरिया है ये खाली खाली बन गया। किससे? अब ये लैंड एरिया खाली रह गई है। अब यहाँ पे जो लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन ब्लू बीटल की है, they get the chance and this area becomes much more abundant of the blue beetle. आप कहोगे सर ब्लू बीटल कहाँ से आया? Again here is the genetic error, genetic mutation, genetic derivation से ही इनकी existence इससे पहले ब्लू बीटल्स की हुई। तो natural calamity के वजह से जो अभी elephant का, हाथी का जो पैर इन पे पड़ा, all the red color beetles crushed much more, their death take place. Then here minimum chances of the, here the least number of blue beetles got a chance of survival. They shows the continuous rate of reproduction with the help of the there is an abundant number of the blue beetles, number increases. Then here also the evolution takes place by the, here the blue beetles, there no doubt their evolution takes place by the red beetles, but the red beetles crushed by a stone, या फॉलिंग स्टोन हम कहेंगे, या लैंडस्लाइड के कारण दब गए। तो कुछ नंबर ऑफ मतलब बाय लकी या बाय चांस लेस नंबर ऑफ द ब्लू बीटल्स got a chance to survive. They show the continuous reproduction. Here the number, this land area becomes much more abundant by the blue beetles. Here there is a decline number of the red beetles. Here crow not matter at all. The predator crow, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं रहा कि natural climate, natural crash take place, natural calamity take place. They cause the death to the huge number of individuals of red beetles crushed into the death. Then there remains the chance of survival of the less number of blue beetles. They were although lesser in number and very lesser in number and to a little space में थे ये। अब ये कैसे अपना इन्होंने जो रेस है, अपना इन्होंने जो नंबर है, इन्होंने कैसे अपना नंबर को इंक्रीज किया है और ये एरिया कैसे अबंडेंट बनी ब्लू बीटल से। it also explain illustration second also explains the concept of evolution. Not evolution takes place by means of natural selection. Also here the evolution is the second factor, second chance is of the by natural calamity. In a given population there is a least number of some mutant individuals, some genetic variant individuals. Then by chance they get the chance of survival and they increase in number by the rate of reproduction. इसको हम कहते हैं they will increase by the reproduction, they will increase the gene frequency. When a least number of population show the reproduction and they increase the gene frequency, इस concept को हम कहते हैं genetic drift. क्या कहते हैं हम? Genetic drift. वो genetic drift क्या होता है? Genetic drift ऐसा एक concept है जिस इसमें इस एरिया में किसका नंबर कम था? ब्लू बीटल्स के नंबर कम था। उन्होंने बाय इनको चांस मिला, चांस ऑफ सर्वाइवल मिला, तो they show the rate of reproduction and they increase the gene frequency. Gene frequency means flow of the genes between the individuals. When they show the intrabreeding, then their number of blue beetles increases, and this is the concept of the genetic drift. And here now there is the another concept. Here I will take here the concept of the illustration third भी explain करता है. It also explains the concept of the evolution. ये भी evolution concept को explain करते हैं. What the illustration third is? Illustration third is मतलब यहाँ पे जो red beetles, यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे क्या होता है? By it is a natural factor. फूड स्कैरसिटी के कारण क्या होता है? फूड स्कैरसिटी, यहाँ एक फूड स्कैरसिटी आती है, नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल लिमिटेशन है, हम इसको कहेंगे इट इज अ नेचुरल लिमिटेशन.
natural limitation. Sometimes there is the natural limitations. We check the number of the population, we check the growth of population, and here the natural limitation here is the food scarcity. क्या हो गया, जो रेड बीटल्स है, रेड बीटल जो है beetles है, they feed on the leaves of the plant If this plant get disease, if it is diseased, due to the disease there is a leaf fall, when there is leaf fall, the leaves का जो production है वो decline हुआ है, disease के कारण जो leaves की जो production है वो क्या हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, जिसके वजह से जो रेड बीटल्स ये मारेंगे नहीं, कुछ मारेंगे या कुछ इनका जो नंबर है वो क्या, वो स्टार्ट हो गया, वो नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नंबर इनका डिक्रीज हुआ, नंबर टू देयर इज नंबर 1 द नंबर ऑफ द रेड बीटल्स डिक्रीज इन नंबर, देयर स्टार्ट डिक्रीजिंग नंबर, क्योंकि हम growth of population depends upon the availability of material. Food makes us healthy and strong, and the number can be increased. When their food is less, then there is the less chance of survival, then their number decreases. कुछ मर जाएंगे भूखे से, तो there is limit, natural limit. तो यहाँ नेचुरल फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम है इस प्लांट को, ये जो बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स है इनको बीमारी लगी, जिसके वजह से लीव्स की प्रोडक्शन कम हो गई, तो बीटल सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ मर गए, कुछ रह गए। तो दूसरा इन्होंने लॉस किया, आप ये लॉस ऑफ वेट, यहाँ पे लॉस ऑफ वेट, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, कुछ यहाँ बढ़िया है, लॉस ऑफ वेट, इनका जो लॉस वेट होता है वो भी कम होने लगा। और क्या हुआ, व्हाट इज द फैक्टर, हियर आई विल शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि क्या हुआ, ये जो लैंड एरिया था, यहाँ पे जो ट्रीज थे, दिस लैंड एरिया, यहाँ पे इट वाज अडेप्टेड बाय, बिफोर देयर वर द हेल्दी, ये मैंने बड़े बड़े दिखाए, जो रेड बीटल्स इससे पहले थे, व्हेन द फूड वर अबंडेंट, when the leaves were abundant and fresh, when the plants were abundant, the beetles were healthy and strong. When the plants become diseased, then there start leaf fall, then the leaf production decline, then the beetles का क्या हुआ, beetles का number भी decline हुआ है, the number of beetles start declining here, and then second is there is a loss of weight. When there is a loss of weight, हमने क्या देखा, इनमें कमजोरी आ गई, अब ये छोटे बन गए साइज से, अब then there is the कमजोरी आ गई, इन रेड बीटल्स में कमजोरी आ गई, तो इनका साइज जो है, they lost the appetite, they lost the body weight, they comes into smaller in size. हाँ, यहाँ पे नेचुरल फैक्टर जो होता है, फूड सिक्योरिटी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आई होप इन द नेचर में सर्कुलेशन होता रहता है, अगर वहाँ फूड की अवेलेबिलिटी रही, अब वो डिजीज ज्यादा देर तक नहीं रही, तो अब खत्म होगी ये डिजीज। तो देयर इज ऑलवेज द नेचर इज नॉट लिमिटेड, समटाइम्स इट बिकम्स अनलिमिटेड, it becomes fully fledged, it supports again, कभी कभार वापस भी आ सकता है। यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी आ गई, फूड की अवेलेबिलिटी क्या होगा, जो बीमारी लगी थी पौधों में, अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी रह गई। फूड की अवेलेबिलिटी में क्या है, इन द होप, ये जो रेड बीटल्स थे, ये रेड बीटल जो थे, ये वापस अपने साइज में आ गए, वापस अपने बड़े साइज में आ गए। दे बिकम नाउ, they start to feed on fresh leaves, they start to growth, they become healthy and strong, they become abundant in number। अब इनका जो नंबर है, यहाँ पे नंबर जो है इनका वो इंक्रीज होने लगा by the rate of reproduction। नंबर क्या हो गया, नंबर starts to increase, number start to increase। Second is then they becomes the healthy and strong beetles, red beetles।
अब ये जो रेड बीटल्स हो गए ये अब तंदुरुस्त बन गए, हेल्दी बन गए, स्ट्रॉन्ग बन गए ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ food. This is not here the variation, genetic variation, inheritance. It is a acquired variation, and it do not play, I think, the role in any evolution. Illustration third ये जो है ये हटके है, यहाँ हटके क्या है, यहाँ पे किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आई, किसी किस्म की एक न्यू इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस नहीं हुई है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स की। हम यहाँ कहेंगे, ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि इलस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड वो जेनेटिकल वेरिएशन बेस्ड पे थे, इनहेरिटेंस वेरिएशन के बेसिस पे थे। द थर्ड वन इलस्ट्रेशन इज अबाउट द, इट इज द एक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने वापस अपने साइज में वापस आ गए, उन्होंने अपने वेट जो होता है वो वापस गेन किया, नंबर इंक्रीज हुआ है। स्पीशीज तो वही थे, ओरिजिनल स्पीशीज, रेड बीटल पहले भी थे, अब कमजोर हो गए बीच में, अब वापस आ गए जब फूड, जब लीव्स बनना शुरू हो गए प्लांट्स पे, नाउ दे बिकम हेल्दी एंड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग। नाउ दिस इलस्ट्रेशन सेकंड इज द acquired variation not play important, no role in the concept of evolution. Dear students, it is all about the concept of evolution with the help of the illustration. First illustration second and illustration third is the acquired variation here take place. ये पहले रेड बीटल्स थे, वहाँ पे अब फूड के स्कैरसिटी के कारण कमज़ोर हो गए, इनका नंबर डिक्रीज होना हो गया, तो ये इनमें वीकनेस आ गई। तो फिर जब फूड वापस आया, ये अपने रेड बीटल्स इनका नंबर इंक्रीज हुआ है बाय रिप्रोडक्शन, दे बिकम्स नाउ अगेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ग्रो इन साइज। नाउ द ओरिजिन स्पीशीज, जो ओरिजिनल बीटल्स थे, रेड बीटल्स, वो वापस ही इसमें रह गए, वापस आ गए। तो देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज द एक्वायर्ड वेरिएशन, it partly remains, it is have no role in the concept of evolution. Illustration third से ये पता चलता है, if there is a effective role that is of genetic variation, inheritance variations, where there is a sharing of inheritance characters from parents to the offsprings, and there is in hope existence of new individuals with new modifications. When there is a accumulation of modification, then there is a variations. Now it look that individual of a population look like different from the existing population. जिस तरह मैंने illustration first में जो green beetles है वो वहाँ पे जेनेटिक चेंज आ गई, जेनेटिक म्यूटेशन आ गई, जिसके कारण ग्रीन बीटल्स, अब देखो वो ग्रीन बीटल्स कैसे एग्जिस्ट हो गए, प्री एग्जिस्टिंग बीटल से, रेड बीटल से कैसे वो प्रोड्यूस हो गए, वो कैसे बने, उनसे उनकी कैसे एग्जिस्टेंस हुई। तो उन्होंने कैसे उस एरिया को मतलब कवर किया है, उस एरिया को कैसे उन्होंने रिप्रोडक्शन के तौर अपना नंबर इंक्रीज किया, कैसे वो प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म उस एरिया के रहे हैं। ये लगता है पहले ये ग्रीन बीटल्स पहले से ही थे, बट दे वर द derived population, they were the individuals of that population with derived characteristics, that is the ancestors characters उनमें आ गए। तो with new characters, then a new species, a new existence takes place with new variations, with a new organism from the existing organism. It is a concept of evolution. Dear student, I hope you understand the concept of evolution. आप मेरे नोट्स वो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इन 3 इलस्ट्रेशंस वहाँ मैंने मेंशन किए अपने नोट्स में, वो आप पढ़िए तो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को हम किस तरह हम डिफाइन कर पाएंगे और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो आगे इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे। लेट अस वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।